Yatra. BJP slams Congress for flouting COVID norms during the Yatra. Congress says everyone will wear masks from tomorrow. War of words between Chief Minister Bommai and Sena leader Sanjay Raut. Bommai calls Raut agent of China. Raut hits back. Pakistan linked to Kanhaiya Lal beheading unravels. NIA charge sheet names 2 Pakistan-based murder accused. Reveals beheading video aimed to spread terror. Sam Curran becomes the most expensive player ever sold at an IPL auction. Punjab Kings win his bid at 18.5 crore rupees. Unspeakable tragedy in North Sikkim, Zema area, where a truck carrying 16 Indian Army Jawans plunged into a gorge while travelling in a 3-truck convoy. These are first images coming in from the accident site in North Sikkim, where the 16 Jawans, that was 13 Jawans and 3 junior commissioned officers or JCOs, lost their lives in this unspeakable road mishap. Remember that Zema is in North Sikkim, not very far from the Indo-Tibetan border. This is where a large part of the Indian Army continues to stay deployed. These were border troops who were returning from a deployment headed to another place when this accident took place. 16 of them, a horrifying number, have lost their lives in this accident. The circumstances under which the accident took place are a little sketchy right now, but the terrain in the Zema area is replete with very sharp turns and extreme drops, precipitous falls on the sides of each road, and that's where this accident has taken place. Bring in India Today's Gaurav Sawant, our managing editor, who's just returned, in fact, from the border areas of Arunachal Pradesh. He's also travelled extensively to Sikkim. Gaurav, you and I have both been to North Sikkim, Zema area. The area where this accident took place, we are told, has many, sharp turns where this convoy was, moving when this tragedy hit. What more can you tell us, Gaurav? This was a 3-vehicle convoy, ALS, the Ashok Leyland Stallion trucks, the backbone of the Indian Army, whether it's carrying men or material. And these soldiers, they were from different units. They were on home leave. They were heading home. And that is when, unfortunately, early this morning, this accident took place at a sharp hairpin bend. The driver apparently lost control of the vehicle, and this truck just plunged into a gorge. It kept, rolling over 2 sets of roads, and then it fell. There were about 20 people on board. 16, including 3 JCOs, sadly lost their lives. Unfortunately, the condition of the other 4 also remains critical. Of course, helicopters were pressed into service to take them to the nearest medical facility. In Sikkim, of course, and subsequently, in case required, they would be airlifted further. But the situation, this area, Shiv, as you well know, this is Yes. where the Himalayas end and the Tibetan plateau starts. India dominates this area, but after the Chinese transgressions in some of the areas in Arunachal Pradesh and the tension in Sikkim, there has been a build-up. A large number of Indian troops had been deployed in this area, but since India is on top of the situation, some troops were being rotated, some troops were also going on home leave when unfortunately this accident took place.
Gaurav, stay with me. Akshay Dongri, our defense correspondent, is also with us. Akshay, the defense minister, tweeted a short while ago. But what's happening, inside the army at this point of time? Obviously, there's going to be an extensive investigation into what happened. As Gaurav was saying, the truck involved is the backbone of troop movement, equipment, especially in those areas. These are very reliable, sturdy trucks. What more can you tell us? What are you hearing, Akshay? Well, Shiv, the biggest point, or rather the question right now that is being raised, and in fact that will be the next point, that is about an inquiry that has to, rather will be taking place as far as this particular incident is concerned. As Gaurav has been rightly mentioning, or rather telling us about the specifications of this particular truck, that is in fact considered as the backbone of the army as far as the troop movement is concerned. How come at a hairpin turn this kind of an incident took place? That will be questioned. Whether there was some sort of lack of maintenance of this truck, whether the truck was overloaded, that will be that each and every angle will be investigated, and that then only we can come to a conclusion that what exactly happened. Now these are very rough terrains. The weather normally is extremely volatile. It keeps on changing from hour to hour, and that is the reason that the army drivers who usually transport the troops there are very, very thoroughly trained. So all of these aspects, from the driver to the maintenance of the trucks, everything is going to be investigated as far as the armed forces are concerned, and that is not just to ascertain that what exactly happened, but to also ensure that similar kind of incident doesn't take place, because these trucks are heavily relied on as far as the troop movement are concerned, and any kind of a conflict situation, these trucks are in fact the lifeline as far as the troop movement is concerned. So that is in fact a very, very sensitive topic, and though it is a very, very heartbreaking incident where we have lost 16 soldiers including 3 JCOs, there needs to be an investigation to in fact investigate, or rather to rule out that what exactly happened and what exactly happened that led to the death of our 16 brave soldiers. Shiv? Stay with me, Akshay and Gaurav. I also want to bring in Lieutenant General Vinod Bhatia. He's the former Director General of Military Operations. He's also commanded a corps at the line of actual control in Sikkim and an infantry division on the line of control. General Bhatia, always a pleasure to have you, sir. I wish it were in better circumstances. What a terrible tragedy, in North Sikkim coming in. 16 soldiers lost in this most unfortunate accident. You've served, you've commanded, you've overseen troops and movements and formations in this area of North Sikkim, sir. Can you tell our viewers and share with us, the terrain, the circumstances under which such a horrifying accident could have taken place? Shiv, it is very tragic. It is heart-wrenching when we lose men like this, especially, its loss of life is very painful. It's very difficult for a soldier. The risks are one too many. The task is there, the terrain is there, the weather. He has to fight everything. It's a very high-risk sort of a job. And such accidents do occur. They should not. It's not the first one. I hope it's the last one, though. The terrain is difficult. The roads are very. It's a treacherous terrain. The roads at this time, especially at this time of the season, the weather this time, it is minus sub-zero temperatures there. The winds are high. The fog, if you think the Delhi fog is bad, imagine what the fog will be out there at about 15,000, 16,000 feet. There are multiple reasons that can happen, and a number of things come together at the same point of time, but it's very painful. Losing a man like this, it is, my heart goes out. There's no words to express our grief, and salute these men, the families. They were coming on leave, they had their dreams, they had their aspirations, their tasks cut out, a lot of things to do. But it is sad. But having said that, this terrain in North Sikkim is high winds. Roads are there, though roads are at best maintained, but this is winter season. There is attrition on the roads due to wear and tear. It is very easy to sit back and say that this would have gone wrong, that would have gone wrong. It's not conjecturing, but having experienced such weather, such terrain there, having seen accidents in Sikkim and other hill areas and
high altitude areas. The number of reasons can be one too many, and it's a combination of the reasons. Whether it is I won't blame the vehicle as much. Even I won't blame the driver. It's just the conditions, the terrain conditions, the road conditions, the weather conditions, sub-zero temperature. The road has got, the vehicle skids off the road. There is a bit of snow, it will skid off the road, and once it goes down a few hundred to 1,000 feet. Difficult to even retrieve, evacuate our men from there. Helicopters can be used. So there can be enough number of reasons. I'm sure corrective actions will be taken. It will be looked into, as it always happens. And I hope that we've seen such accidents almost year after year. Unfortunately. But that is part of soldiering, that is part of life, and that is part of deployment in the high altitude regions, especially along the LAC and the LC, LAC especially, and all these areas are very, very difficult, 15, 16,000 feet, not easy to survive. Units, my condolences to the units also, because their loss. This is unit is a family. The function of family. They would be saying they have to get up and start doing things again. They have to put this behind them and make sure that the high vigilance is maintained, especially at a time when they're very sensitive out there along the line of actual control along the Indo-Tibet border. So there are things which touch your heart. Condolences to the families who have lost their near and dear ones. It is a sad loss. I hope it wouldn't happen, but it has happened. General, the point that you made that in the recent days, as we know, our troops and Jawans on the border, have been in the headlines from a different part of the country, which is in Arunachal Pradesh, but it is the same border that we share with the China-occupied Tibet. So in many ways, this feels even more emotional for those watching this story, because we've been talking about our Jawans, our troops at the border with China for the last few days. And these are troops, manning that frontier, that troubled frontier, who, as you said, were returning home, for, festive season leave, probably after a long deployment, finally getting some time to go home to spend time with their families. And that makes it even sadder, sir. Yes, it is. It is very sad. It's very tragic, because these men would have finished the tour of duty for this particular season. They would have been there for the toughest part, patrolling the areas, the wind speeds out there at these altitudes in North Sikkim, especially the plateau, something like about 50, 60 knots on average. Night patrols, nighttime they're on duties. It is winters, severe winters, snow. Even the snow is swept away by the breeze. It is the conditions I really cannot even try and this thing. You have to experience it. Some of Shiv, you've been there, Gaurav's been there, others have been there. You have experienced it yourself. And those who are deployed there for let's say 2 years, it's not easy for them. It's a very tough life. And when they're coming back, there is a sense of accomplishment, a sense of achievement that they have done their tenure right now, and they want to go back, spend some time with the near and dear ones. It's a festive season, rightly said. They come with, when they come on leave, they come with tasks cut out. They got that, children's education, they have families to be looked after, medical care of their parents. There are a number of things, houses to be made. There's so many things. And the families back have aspirations that they're coming back, they wait. And when this happens, they are heartbroken. They are inconsolable, rightly so. But that is a soldier's life. The soldier's life is high-risk life. It is everything of the risk. Like I said, it's a task, it's a terrain, it's a weather, it's a movement, you name it. And we have hybrid sickness in these areas. It takes a toll on your body, attrition over the years, and then in my old age, you feel it that this is what would have happened that time. So the results are now. So this is soldier's life, and we are volunteers, and we actually love being together. It is the unit which is there who will also feel the pinch of the soldiers now they're missing. They'll be long remembered, but then these are things which happen. General Bhatia, always a pleasure. And like I said, thank you for your time. I wish it were in better circumstances that we were talking about our troops. And once again, I join you in expressing our condolences from Akshay, Gaurav, General Bhatia, myself and the rest of us here on India Today to those brave soldiers, to their families. We will continue to tell the story and keep the focus. Nobody puts the spotlight on our defense forces as much as India Today does. That's not a boast, that is a fact. Gaurav, I want to come back to you now.
many of our viewers want to know, and I'm sure they want to know, what happens now? What kind of protocols kick in after such a tragedy? Because while the units are known, and obviously we're not going to put out any such information, the names of the soldiers haven't been published just yet, because the army would be, and the units on the ground would be in the process of conveying that information to the next of kin. Could you take us through how that works, Gaurav? So, Shiv, we know the names of the 3 JCOs, we know the names of the 13 Jawans, we know the names of the 4 who are critically injured, but it's for the army to inform the families first. And of course, for their battalions, for their regiments, they would be doing that. So once the families are informed, the mortal remains would be taken for legal requirements, which is a post-mortem. A post-mortem will be conducted. A court of inquiry has already been ordered. So troops will now get down into that gorge and recover every bit of that ALS or that Ashok Leyland Stallion truck. This is capable of carrying anything between 5 tons to 7.5 tons of load. So it's a very capable vehicle. Every bit would be carried for a court of inquiry. They would now go back to check when was this last serviced. Were there any problems with it? Was anything written about any issue? If not, what was the condition of the driver? When did he last drive? When did he last sleep? How long had he been through, his training? All of that, because only the most experienced military drivers are permitted to drive in hills, and more so in mountains and in extreme high altitude. This is extreme high altitude. Anything above 12 to 14,000 to 16,000 feet is extreme high altitude, and you need the most experienced drivers in this area. So after a court of inquiry, if there are lessons to be learned, they will be quickly adopted, but the mortal remains of every soldier will be sent back with a unit officer or Jawan, or a Jawan or an officer from the nearest location to their homes, and the last rites would be conducted, Shiv. Gaurav and Akshay, thank you very much for joining me on this tragic story. I wish we didn't have to report such an awful tragedy. For all of those families, our thoughts are with them. We will continue to report and bring in more facts. We will get you an update on that story. We're also receiving breaking news coming in of a shooting that's coming in from a busy tourist route in France's capital, Paris. Several feared injured. The police are said to have arrested at least one suspect. The street features several bars and restaurants. These are images coming in from Paris, the capital of France, in the Clement Lanotte area, which is a courtesy of Clement Lanotte. I beg your pardon, that's not the name of the place, that's the name of the person courtesy these images are coming in from. As you can see, lots of police in that area. Some kind of a mass shooting has taken place. Several persons suspected to be, many tourists are suspected to have been shot and injured in a mass firing. One suspect is said to have been arrested so far. These are pretty much the only images coming in from that particular area at this point of time. Remember, Paris has had mass shootings in the past as well, and terror attacks in the past. It's had mass shootings on at least 3 occasions in the last few years. The Charlie Hebdo massacre is one example. There have been other Paris shootings as well. So terrorism is an issue in the French capital. Whether this particular shooting has a terror angle is not known just yet, but this particular area features a lot of bars and restaurants. It's known to be crowded, so it's possible that the person who is the perpetrator here wanted to cause mass casualties. We don't know if anyone's lost their lives just yet. We hope not, but we can confirm that many people have sustained gunshot injuries. One suspect has been detained by the French police at this time. We're going to try and get a reporter in on this story in just a while, but these are images. As you can see, the area has been completely cordoned off. One street corner has been blocked off with police vehicles. People have been kept away. There are fire service personnel also on site. There are special forces personnel guarding the area. There are SWAT vehicles. There are Parisian police. Okay, I want to go across to Eduardo Q, who's a reporter live from Paris at this point. Eduardo, thank you very much for speaking to India today. Can you tell us what you know about this shooting that's taken place in Paris?
Yes, hello. We know very little other than a man over 60 years old in the very center of Paris in the 10th arrondissement came out with a gun and started shooting. There are several people injured. We don't have any reports of any deaths. The area has been blocked off by police, obviously, and the suspect has been arrested. That's the only information we have at the moment. We have absolutely no information on who this person is or what the motive might be. But according to police, the man has been arrested. Do we know if there are any casualties, Eduardo? There are several people are injured, but we do not know the extent of the injuries. And as I said, as far as we know so far, there are no deaths. Okay, and you're saying that it is not clear what the motive might be at this point of time, but a terror angle is not being ruled out, I imagine. I don't know. The police never rule out a terrorist angle immediately, but it may be related to some sort of terrorism, or it may just be somebody who is not well mentally. Yeah. We have absolutely no idea of what the motive is at the moment. It just happened not very long ago, so we don't really know very much. Thank you very much, Eduardo Q, live from Paris there on the shooting that's taken place in that area. Very little information coming out, but the suspect, who is said to be at least 60 years old, according to the input that we've just received from Paris, is responsible for the firing. There are many people who've sustained injuries in the firing. Terror angle not being ruled out, but we don't know just yet what the motive of the gunman was. He has been detained. We don't know if there was more than one shooter, though. We're going to keep track of the story very, very closely. These images coming in from Paris. And keep watching India Today. Coming up next, Shraddha Walkar's father, Vikas Walkar, has spoken exclusively to India Today's Sudhir Chaudhary. His first and most detailed interview on the murder, abuse and butchery of his daughter Shraddha. You don't want to miss it. It's coming up next. What's new? What are there waiting lines for vehicles? What are we gearing up for the new year? What are some new plans? Could you tell us like a sneak peek into that? So we couldn't supply cars this year the way people wanted. Unfortunately, we didn't do as well as some competitors do in terms of getting the chips. But now our supplies are getting improved. So so hopefully next year should be a great year for us. We're looking forward to crossing 100,000 vehicle sales, and we are launching another EV in April. So that's interesting.
जी, आमतौर पर जब हम किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे समय में हम मिल रहे हैं कि मैं आपको शायद ये भी नहीं कह सकता, आपका शायद स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ऐसा है जब हम एक बहुत बड़े दुख के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ऐसा लगता है कि आपकी पहचान विकास वालकर से बदलकर श्रद्धा के पिता की हो गई है। ये 7 महीने आपके कैसे बीते? मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे बारे में ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शायद मैं खुद ही झेल रहा हूँ। ये मेरे घर में अभी और कोई बड़ा साथ देने वाले नहीं हैं, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले। जी, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना होए। जी विकास जी, जब इस तरह की घटना घर में हो जाती है अपने आसपास, तो सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो डिनायल मोड में होता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर धीरे धीरे वो स्थितियों को स्वीकार करने लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में आपको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर आपने कुछ समय लगाया और अब आपको जाकर विश्वास हुआ कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना हुई? जी हाँ, शुरू में तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। जब तक मैं जब ये श्रद्धा के बारे में मुझे पहले से मालूम था कि श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी, यही मैं मान के चल रहा था। जब तक ये यहाँ दिल्ली में आके भी मैंने जब ये सब सारी चीज़ें देख रहा था जो उन्होंने कही, जो उस लड़के ने कही, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर में जब मेरा डीएनए का सैंपल मैच हो गया, तब मुझे फिर बहुत महसूस हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अब मेरे साथ श्रद्धा नहीं है। तो मुझे अभी भी वही दुख लग रहा है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। यानी उससे पहले तक आप लगातार ये प्रार्थना करते होंगे कि भगवान ना करे कि ये श्रद्धा हो, भगवान करे ये सब झूठ हो। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था मुझे। ये श्रद्धा कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, होनी चाहिए। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं था कि ये श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ है करके। तो जब ये डीएनए का ही जब रिपोर्ट सामने आया, तब उसी दिन मुझे मतलब मालूम हो गया कि ये श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। विकास जी, जब भी हम किसी घटना पर विचार करते हैं तो कई बार पास्ट में जाते हैं, जब वो पूरा घटनाक्रम होता है उसको कई बार जब रिवाइंड करके देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एक मौका लगे दोबारा घटनाओं को रिवाइंड करके दोबारा से जीने का, तो आप कुछ अलग करते, श्रद्धा को बचाया जा सकता था? जी हाँ, मैं तो मतलब जब से वो घर से चली गई थी, तब से मैं कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी मेरे घर में वो वापस आएगी। मैं हमेशा यही सोचता था कि उसका कुछ तकलीफ़ हो जाए और मैं तुरंत उसको घर पे वापस बुला लूँ, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसको क्या तकलीफ़ें हो रही थी इन 3 सालों में। और जब ये कुछ घर से जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको जो तकलीफ़ हुई और उसने जो वसई पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसको वो मारपीट करता है और उसके धमकी देता है, टुकड़े टुकड़े करूँगा करके, तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता चला कि ये ऐसा वाक़या उसके साथ हुआ था। तो मुझे वही लग रहा है कि अगर उस टाइम पे मुझे अगर पता चलता तो मैं शायद उसको बचा पाता था। और अगर वो तब भी आपके पास आने से इनकार करती तो? नहीं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता था कि उसको घर पे ही लाऊं, किसी भी हालत में। मैं ऐसे नहीं सोचता था कि वो मेरे साथ छोड़ दे और वापस ना आए। मैं यही मांग कर रहा था भगवान से कि ये वापस घर पे आए करके। आपको पुलिस बाद में उस जगह पर भी लेकर गई जहां वारदात हुई थी, या जहां उस जंगल में जहां पर उसने कहा था कि उसने श्रद्धा के जो शरीर है उसको वहां पर अब मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन क्या उस जगह पर आपको लेकर गए थे?
जी हाँ, मुझे एक दिन वहाँ पे लेके गए थे जहाँ वो जिस फ्लैट में रहते थे। तब तो मैं मुश्किल से खड़ा हो रहा था वहाँ पे देख के ये सब, जहाँ वो सब घटना वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मैं सुनने के भी मूड में नहीं था कि ये सब मैं मेरे कानों से सुनूं करके। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीती होगी तब। मैं खुद ही जानता हूँ ये सब। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मेरा कुछ हो जाएगा करके। तो मैं फिर वहाँ से तुरंत बाहर जाके मैं खड़ा हो गया। तो उसने वो सब घटना वहाँ पे बताने के बाद मुझे फिर वहाँ जहाँ जंगल में उसने वो उसके टुकड़े फेंके थे वहाँ लेके गए थे। और वहाँ भी कुछ उसको उस टुकड़े को निकाल के उन्होंने दिखाए। तो मुझे भी तभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटी के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ किया होगा करके। उस वक्त भी आफ्ताब आपके साथ था? जी हाँ, वो उस वक्त वही बता रहा था पुलिस को, ये सब मैंने ऐसा ऐसा किया है करके, ये टुकड़े मैंने यहाँ डाले हैं करके। तो उसी ने ये सब स्टोरी बता रहा था वो। और उस वक्त आप सुन रहे थे? जी हाँ, मैं सुन रहा था तब। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या उस समय बीती होगी। और उस समय बिल्कुल लगा होगा कि पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आपने उस दिन कुछ कहा आफ्ताब को? मैं तो कुछ कह नहीं पाया उसको कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, ये इससे डाला मेरे बेटी को उसने टुकड़े करके। विकास जी, अब आप हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बता सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में आगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विकास जी, हमने ये देखा कि बाद में मैंने आफ्ताब की कुछ तस्वीरें देखी जब उनको FSL से जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे जैसी कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था, वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके कंधे झुके नहीं थे बिल्कुल भी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा कैसे दरिंदा है, ये सब कुछ नॉर्मल जैसे बात कर रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे ही स्टोरी बता रहा है ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये सब ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सब। जब तक मुझे DNA का कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा करके। अब आप इस कानूनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा उसने बेल की कोशिश की बीच में, हालांकि आज उसकी बेल एप्लीकेशन थी, उसने उससे विड्रॉ कर लिया बेल की एप्लीकेशन को। लेकिन जेल में ऐसी खबरें आती हैं कि कभी वो कोई किताब मांगता है पढ़ने के लिए, कभी उसकी कोई और फरमाइश होती है कुछ करने की। तो कुल मिलाकर उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो उसे ना तो कोई पछतावा है और वो धीरे धीरे बस किसी तरह अपना टाइम पास कर रहा है। वो तो पता नहीं, वो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। एक तो वो कुछ सही ढंग से बताता नहीं है, अभी भी उसको कुछ भी पछतावा नहीं है, सब कुछ किया है उसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उसको कहीं से बाहर से सपोर्ट होगा तभी ये सब वो नॉर्मल सी बातें कर रहा है। एक हमारे दर्शक हैं तुलसी जितेंद्र मलम, वो कहते हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि श्रद्धा के पिताजी को क्या लगता है कि उस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए?
और अगर ये फैसला उनको लेना पड़े तो आप उन्हें क्या सज़ा देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे बेटी को उसने 35 टुकड़े किए तो उसके 70 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसको पूरी भारत में उसके टुकड़े बिखर जाए और ये पूरे हमारे देश को एक मिसाल बन जाए कि ये ऐसी सज़ा भी हो सकती है। पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सज़ा, या जैसे आप कह रहे हैं कि सज़ाए मौत उसे होनी चाहिए, वो उसे होगी, या ये भी आप तो जानते हैं हमारे कानून का सिस्टम क्या है, वर्षों लग जाएंगे और जब उसे सज़ा होगी भी तो शायद तब तक 15-20 वर्ष और बीत चुके होंगे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी हाँ, वो तो कोशिश करेगा ही वो जाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक ये केस चलेगी। और मेरी यही मांग है कि इसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और एक पूरे भारत में ऐसी मतलब मिसाल बननी चाहिए कि ये ऐसी सज़ा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। आपका एक बेटा भी है जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बेटे का क्या रिएक्शन था? बेटा भी बहुत दुखी है, वो तो अभी पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान यही इसी के ऊपर है। मैं हमेशा उसको समझाता हूँ कि नहीं बेटा, तेरे को आगे पढ़ना है, बड़ा बनना है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मैं ये सब संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी उसका मन यहीं पे वापस आता है और मुझे बार बार पूछता है सवाल कि पापा आज की अपडेट क्या है। रोज़ वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है। तो मैं यही समझाता हूँ उसको कि नहीं, आगे तेरे को अभी आगे पढ़ना है, ये सब होते रहेगा और इसका जो होने वाला तो होगा ही, उसको सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो और आगे पढ़ लो। जब ये घटना हुई थी विकास जी, तो आपको याद होगा 24 घंटे टीवी पर यही घटना के बारे में आ रहा था, लगातार अखबारों में कई पन्ने इसके ऊपर भरे होते थे। आप पढ़ते थे उस दौरान, अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे? नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं था। मैं बहुत ही सदमे में था तब, और मैं घर से भी नहीं निकल पाता था। ऐसा मैं सिर्फ मैं टीवी देख के कभी कभी जान लेता था कि ये श्रद्धा के बारे में ऐसे सब बातें हो रही है करके। विकास जी, इसके दो पहलू होते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। पहला, और दोनों सामाजिक पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपकी बेटी चली गई और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने लगी, उस समय समाज का रवैया क्या था? हम बहुत बार सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर हो जाता है। समाज, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो उनकी भूमिका जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके केस में क्या भूमिका रही समाज की? ये तब की बात है जब तक लोगों को ये पता चला होगा कि श्रद्धा अब आपके साथ नहीं रहती। जी हाँ, मुझे समाज तो यही समझाता था कि ये बेटी को थोड़ा समझाना चाहिए था। तो मैं तो हमेशा समाज को भी यही कहता था कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो शायद नहीं मानी। तो समाज यही सोचता है कि ये बेटी ने ऐसे कैसे किया, और हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मुझे हमेशा यही सुनाते थे कि ये तुम थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर, कोशिश करो उसको समझाने की। और आपको ऐसा लगता था कि ये इसकी एक नाकामी है? लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये नाकामी है, आप एक पिता के तौर पर नाकाम रहे। जी हाँ, आपको भी जज करते होंगे जी लोग। हाँ, जी हाँ, मुझे जज करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये नाकाम रहा करके। लेकिन मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उसको वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। और जब ये घटना हो गई उसके बाद समाज का क्या रोल रहा? क्या समाज ने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ आया, या फिर उसमें भी ताने और उलाने ही रहे?
जी हाँ, वो समाज तो उनको पता है कि ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी थोड़ी दुखद ही है। तो समाज तो यही सोचता है कि ये ऐसा ये हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मुझे तकलीफ़ हो रही है कि समाज मुझे वही एंगल से देख रहा है कि ये इसके वजह से ये हुआ है करके। बहुत बार हमने मीडिया में ये भी देखा कि इसको एक धार्मिक एंगल भी दिया गया इस पूरे मामले को। आप भी ऐसा समझते हैं क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मामला था और हमारे देश में तो आप जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई और किसी की बात करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो बातें सही हैं? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने जो मतलब श्रद्धा को जो ब्रेन वॉश किया था, जो हमारे खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था, तो उसका कोई मतलब प्लानिंग था शुरू से ही। तो मुझे यही लग रहा है कि वो धार्मिक एंगल से भी देखा जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं आपको ये भी लगता है कि धर्म का एंगल तो है ही, और जिस तरीके से परवरिश उसकी हुई होगी शायद उसमें भी कोई कमी रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बचपन से जब तक वो 22-23 साल की हो गई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो नॉर्मल सी हमारी श्रद्धा थी। लेकिन इसकी जब दोस्ती हो गई उस लड़के से तब भी वो एकदम से बदल गई और हमारे खिलाफ जाने लगी। तो मैं ये नहीं मानता कि हमारी परवरिश में कोई कमी रही, लेकिन शायद वो उसके आने से पता नहीं हम कहाँ कम पड़ गए जो हमारे खिलाफ गई हो। लेकिन लड़के में जो है इतनी कट्टरता जो आई, ये उसकी परवरिश का नतीजा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ कि ये उसकी परवरिश का नतीजा है। शायद अगर उनके ये घर वालों को भी अगर कुछ समझ में आता तो शायद हमें बताते थे कि ये ऐसा हमारा लड़का है, उसको तकलीफ़ दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके परवरिश में भी कुछ कमियां हैं। आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी जो इन चीज़ों के बारे में सोचती होगी। लेकिन क्या आफताब ऐसा था जो इसी एंगल पर काम करते हुए उसके मन में यही बात थी? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ये लड़का यही सोच के चल रहा था कि ये लड़की को फंसाना है। उसका हमेशा मैं जब भी हमारे घर में श्रद्धा से बातें करता था तब वो हमसे कभी कभी प्रॉपर्टी की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें करने लगी है। तो तब मुझे शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है ये लड़का, और शायद उसको ये मेरे बेटे को वो पूरा प्रॉपर्टी लेके उसको फंसाना चाहता है। यही मैं कहता था, लेकिन वो कभी मानी नहीं हमारी बात। आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि क्योंकि वो लड़का मुस्लिम धर्म से था इसलिए ये बात यहाँ तक पहुँची? शायद यही है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम धर्म का नहीं होता था तो मैं उसको शायद उस एंगल से देखता था कि ये शायद कुछ एडजस्ट करेंगे और उसके साथ शादी करवाएंगे। लेकिन धर्म के वजह से हम कभी माने नहीं कि उसके साथ शादी कर ले करके। लेकिन देखिए विकास जी, कितनी सारी शादियां ऐसी हैं हमारे देश में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई हैं और वो सफल हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की, और भी बहुत सारे लोगों ने की हैं। उनकी तस्वीरें छपती हैं, लोग उन्हें एक आइडियल परिवार की तरह देखते हैं। जी हाँ, सही है। लेकिन जब ये उसके बारे में मुझे पता चला, श्रद्धा के बारे में, कि ये इनकी दोस्ती पिछले 6-8 महीने से चल रही है, तो मैंने सब पूरा जानने की कोशिश की ये श्रद्धा के साथ कैसे रहता है, क्या करता है। तो मुझे वो सही नहीं लगा तब, जो उसका जो बर्ताव होता था। और फिर हमसे भी बातें उसी तरह से करने लगी मेरी लड़की। तो मैं उसके पूरे खिलाफ था कि ये सही लड़का नहीं है करके। आपको पहली बार ये कब पता चला कि श्रद्धा गायब है?
और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका दोस्त, श्रद्धा का दोस्त है, उसने हमें फ़ोन करके बताया 14 सितंबर 2022 में कि श्रद्धा का मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, और उसने शायद फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे है। तो आप ज़रा कोशिश कीजिए कहाँ है ढूंढने की। तो मैंने भी फिर उसके कई लड़कों से या उसके दोस्तों से कांटेक्ट की, लेकिन वो कहीं उसका जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा कहीं मिसिंग है करके। एक वीडियो हमारे पास श्रद्धा का है, एक बार आपको वो वीडियो हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये वीडियो श्रद्धा का जब बना था, आप देखिए। कभी आपको लगता है विकास जी, जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, ये तो आप ही की कलेक्शन में होगा, आपके पास है ये वीडियो, कि कभी आपको ऐसा लगता हो कि देयर इज़ अ क्लैश जो आप है और जो आप चाहते हैं, और कभी आपको लगता हो कि शायद ये एक बुरा सपना है, असल में श्रद्धा यही होगी? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी, क्या श्रद्धा गई नहीं होगी, यही कहीं होगी, क्योंकि इतनी वो हंसमुख थी। मैं मानता ही नहीं था कि ये ऐसे इस तरह से छोड़ के चले जाएगा करके। ये जो 7 महीने हैं, ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आए? जो मैंने पहले भी आपसे पहला सवाल यही किया था कि अब आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। पहले ये समाज आपको विकास वालकर के नाम से जानता था, अब सभी आपको शायद ये कहते होंगे कि देखो श्रद्धा के फादर। और शाम को जब आप अपने घर वापस आते हैं, रात को सोते हैं, आपके क्या विचार होते हैं? मुझे यही ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद एक कुछ बुरा सपना जैसे ही लग रहा है। ये मैं मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो पता नहीं आगे कैसे मैं जी पाऊंगा इसके बारे में। आपने अपने लिए भी, अपने बेटे के लिए भी कोई और किसी तरह की मदद लेने की कोशिश की ताकि आप इस सदमे को ओवरकम कर पाएँ? जी हाँ, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेला नहीं रह पाता। जो मैं घर में अभी शायद मेरे माँ और मैं दो ही जन रहते हैं। तो मैं हमेशा मेरे करीबी दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करता हूँ और उनके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे हल्का महसूस होता है। दोस्तों के साथ बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं। जी। अब ये जो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई है, ये आप कैसे लड़ेंगे? जी, मुझे तो अभी आगे चल के लड़ना ही है। उसका नतीजा भी मुझे यही होना चाहिए कि ये उसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि आगे श्रद्धा के लिए ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ काम करूँ जो घटना हुई है ऐसे दोबारा ना हो। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने सवाल भेजा है कि मैं, सवाल नहीं है, वो खुद भी कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं है, लेकिन बेटियों को अपने माध्यम से बताएं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते। आपके मन का भाव भी यही है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि माता पिता तो कभी बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक वो उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। विकास जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो संवाद है हमारे और आपके बीच में, जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, इसका मकसद यही था कि हम आपकी बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएं, देश के परिवारों तक पहुंचाएं, माता पिता तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। और जो लोगों के जो भाव हैं, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, वो भी हम आप तक लोगों की भावनाएं पहुंचाएं।
और एक मकसद हमारा आज का ये भी था कि हम श्रद्धा की जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हम भी भागीदार हों, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में हम भी, और देश का हर व्यक्ति, हर परिवार आपके साथ है, और सब लोग ये चाहते हैं कि श्रद्धा को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए और दोबारा हमें ऐसी कोई घटना नहीं देखनी है। तो आप यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी ज़ोर पड़ा होगा जब आप वो सारी बातें मैंने आपसे कहा कि आप उन्हें याद कीजिए, वो मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, लेकिन कई बार वो बातचीत, वो बातें बाहर लाना भी ज़रूरी होता है ताकि देश तक एक संदेश जा सके। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये जो ब्लैक एंड वाइट है बहुत ही ख़ास है, बहुत स्पेशल है। इसमें आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये संवाद जो है इससे आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर अनुभव किया होगा, और इस संवाद का हमारे पूरे देश में सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। I am linking this to COVID is primarily on account of fast changing sort of sentiment over the last 2-3 days this week with respect to COVID and its impact on the Indian economy, Indian business, which has recovered to a large extent from the earlier lockdowns. What's your own sense? My sense at this point in time is that we should not panic. There is a need to be vigilant, which is what is happening in the sense that the government is on top of things. The health secretary has written to the states and other stakeholders to increase the level of alertness and do genome sequencing so that we are able to pick up any new strains if that were to happen. But you know, the information coming out of China in the last couple of days, I mean, this is a society where news flow is tightly controlled. So you don't know whether something is either being underreported or what is escaping through is hyperbole or reality. It's very hard to tell. And I mean, things will become clearer in the next, I would say, 5-7 days or so. I believe the World Health Organization even today has called upon China to share information about what is happening. And until we have more authentic information, I don't think we should get carried away. And there is certainly no need to panic. From a Indian perspective, the population is by and large fully vaccinated with 2 doses, and a large number have got the 3rd precautionary dose as well. So we are about as well prepared as we can be. And from a business perspective, again, cyclical sectors are, have deleveraged their balance sheets to a large extent. I mean, you have a situation where there is a large reserve of foreign exchange, so that we are, which is being used judiciously, and that's about what we can do. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. The chairman of Pakistan's ruling political party and the country's foreign affairs minister, Bilawal Bhutto Zardari, bragging about the killing of global terrorist Osama bin Laden by a foreign force in his own backyard. Just like all his predecessors, Bilawal too concealed the dark reality of terrorist leaders of globally sanctioned outfits like Jaish-e-Mohammed, still being nurtured under protection of his government. An undercover investigation by India Today now reveals
that the group responsible for several terror attacks in India, including the hijacking of Indian Airlines plane in 1999, the 2001 attack on the Indian Parliament, and the Pathankot attack of 2016, has now renewed its annual fund collection drive, seeking to build hundreds of new mosques all over Pakistan. Working with experts, India Today was able to infiltrate the WhatsApp groups Jaish-e-Mohammed operatives have been using. We also managed to speak to one of the operatives from Peshawar, tasked with responsibility of collecting funds. The Jaish-e-Mohammed operative provided details of an account number with Mizan Bank, Pakistan's prominent Islamic bank that offers a range of Sharia-compliant banking services. The terror operative provided us multimedia outlaying unclad details of the mega Jaish fundraiser. According to the details provided by Jaish-e-Mohammed, the banned terror outfit has set out a target of raising 1 crore Pakistani rupees for building each mosque, 16,000 rupees for a prayer carpet, and 1,000